All the Baal Vihar kids will be performing and giving presentations of what they have learned. उन्होंने बाल विहार में क्या क्या सीखा है, आज आपको ये मुंह जबानी सुनाएंगे, मतलब बाय हार्ट। तो याद करके छोटे छोटे इतने छोटे छोटे बच्चे सभी अपना पाठ याद करके आए हैं। बाल विहार में हर साल बच्चों को सिखाते हैं, जो कि ना सिर्फ बच्चों के लिए है, हर मनुष्य मात्र के लिए है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि सवेरे उठते ही हम अपने हाथों का दर्शन करते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, ब्रह्मा जी का वास होता है। तो हाथों को देखकर मंत्र बोलते हैं। और धरती माँ जो हम सबकी माँ है, हम लोग सब अपने पैरों के साथ उनके ऊपर चलते फिरते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम उड़ तो नहीं सकते, जमीन पर ही चलना पड़ता है। लेकिन माँ है ये, देवता है ये, तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने एक स्तुति, एक प्रार्थना बनाया है कि धरती माँ से बैठने से उठने से पहले हम मंत्र बोल के क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हम आपको अपने पैर को स्पर्श करने जा रहे हैं, तो हमें क्षमा करें। तो ये सब, ये जो है, ये डेली हम खुद भी करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। आप लोग भी सीखेगा, जरूर कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे बच्चे अब पहले आएंगे और आपको सबसे पहले धरती माँ के लिए प्रार्थना सुनाने आ रहा है अद्विक चतुर्वेदी। ये शर्मिला बच्चा है, आ जाओ जी, बोलो प्रणाम। प्रणाम दीदी जी। नमस्ते आदिबार, नमस्ते आदिबार, नमस्ते आदिबार, नमस्ते आदिबार। टमाटर काटने की पापा लिटर पति के किट्टुपति नव तुम्बे पादर स्पर्शन आपको एक बार सुना देती हूँ। समुद्र वसने देवी पार्वती स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये मंत्र उन्होंने उसने पूरा बोला है, उतना शायद आपको क्लियर नहीं हुआ, बट वेरी गुड। मंत्र का मीनिंग सुनाने आ रही है। नमस्ते everyone, my name is Pancha and I am 6 years old. I do namaskar to Turkey. Very good. Very good. The ocean is a cup and the mountain is a chest. Who is the wife of Bhagwan Vishnu? Please forgive me touching you with my foot. नूपुर रोजा ना मूड नहीं है, बोलो नूपुर। कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, इसको आता है पूरा, बहुत ही स्मार्ट है। इस साल का जो टॉपिक मैंने रखा था पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ बोलने से आपको भी शायद नहीं पता होगा कि ये क्या है, और ये यज्ञ 5 कौन कौन से प्रकार के हैं। तो हाँ, तो आज आपको बच्चे ये सारे बताएंगे। पंच महायज्ञ हमारे शास्त्रों का आदेश है, और भगवान स्वयं गीता में भी बताते हैं कि ये यज्ञ हमें रोज करना चाहिए। हर एक मनुष्य मात्र को ये 5, स्पेशली जो गृहस्थ लोग हैं, उनको ये 5 प्रकार के यज्ञ रोज करना चाहिए। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ
कौन कौन से हैं और इसके मतलब क्या है, इसको करना कैसे चाहिए, ये सब कुछ बच्चे ये आपको सुनाएंगे अपनी भाषा में। तो सबसे पहले यज्ञ का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यज्ञ। फर्स्ट सिद्धांत इज कमिंग टू टेल। सिद्धांत मलिक। My name is Siddhant and I'm 10 years old. The word yagna is derived from the Sanskrit word yaj, meaning divine worship. Divine worship is done in the form of sacrifices. Hence, yagna means sacrifice. When we give something, we feel we lose something. But in giving, we do not lose. Sacrifice is therefore again not a loss. According to Vedas, we should lead our lives in sacrifice, in which every action should be an offering to Bhagwanji. When everything we offer to Bhagwanji is given back 100-fold. When one performs a deed selflessly, offering the fruit of karma to God, this task becomes a yagya. With a thought like that, even a simple task like eating can become a yagya. Thank you. Loretta, please Mohan. My name is Loretta and I am 12 years old, and I'll be explaining the actual purpose of a yagya. The yagya gives a human being an opportunity to help others without selfishness. Our lives as human beings can only be sustained by the help of deities, people, and nature. That is why we give back to people and others as an obligation to Bhagwanji. There are 5 types of yagyas to be done by every householder. The 5 yagyas are: 1. Dev Yagya, sacrifice all devas and deities. 2. Pitra Yagya, sacrifice to all parents and ancestors. 3. Bhut Yagya, sacrifice to all creatures and animals. 4. Manusha Yagya, sacrifice to all people. 5. Brahma Yagya, sacrifice to all our scriptures. Doing these 5 yagyas can lead to spiritual growth in a person. थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये हमारे शास्त्रों में जो दिया गया है, ये सैक्रिफाइसेस का ये एक आदान प्रदान है जो अभी आज जैसे सुनाया कि 5 प्रकार के यज्ञ हैं: देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। तो जैसा भी ये बता रही थी और आगे भी कि देवताओं लोग के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं कि कैसे ये सिस्टम बना है कि हम लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं और देवता हमें भी देते हैं। तो ये आदान प्रदान का ये जो है ये चलता है इसमें। तो अब नेक्स्ट इज आर्नव। प्रणाम दीदी जी, नमस्ते everyone. My name is Arnav. I am 7 years old. In the Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna explains about the obligatory duties for human beings. Obligatory duties are those duties that you cannot avoid, because they are meant for your welfare and that of the world as well. From all the obligatory duties, the Pancha Maha Yagya, or 5 daily sacrifices, are the most important for the householders. These 5 yagyas I have mentioned before. Now let us learn about these yagyas in more detail. ये हमारा कर्तव्य है, इट्स आवर ड्यूटी। ये पंच महायज्ञ चॉइस नहीं होता है, शास्त्र ने ड्यूटी दिया है मनुष्य मात्र के लिए। सो नेक्स्ट वंशिका आएगी आपको देव यज्ञ के बारे में बताने के लिए। My name is Vanshika and I am 9 years old. Today I will be telling you the meaning of Dev Yagya. The Dev Yagya is a very important one. Brahmaji has created both humans and Devtas in such a way that they are dependent on each other. The Devtas are responsible for order and regularity of the world. They are mighty and powerful. They can manifest their desires and dreams, but they cannot grow food for themselves. Brahmaji has created them like that because he wanted them to be dependent upon humans for their food and help them in return. Brahmaji also made sure that humans were dependent upon Devtas by making them incapable and achieving certain desires in life for which they need to seek help of the Devtas. The Devtas, in this way, we bound Devtas to humans and humans to Devtas by making them interdependent. Krishna Bhagavan is saying the same in Bhagavad Gita
chapter 3, shloka 11. Thank you. ये देव यज्ञ किस लिए, जैसे मैंने बताया कि देवताओं के ऊपर हम डिपेंड करते हैं और वो हम पर, और ये बात भगवान ब्रह्मा जी ने बताया स्पेशली, जो कि भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं। तो ये श्लोक जो है हार्मनी नित्य रूप पर आकर सुनाएगी आपको। My name is Harmony and I'm 6 years old. Devan pavayatanena iteva pavayantu vaha parasparam pavayantah yaha paramavapsyatha. तो इसने बहुत अच्छे से याद किया है। अब इसका जो मीनिंग है यश आकर आपको यश देगी। इस श्लोक का अर्थ क्या है ये आपको सुनाएगा। नमस्ते everyone. My name is Darshan. Who is so? Yeah, say the meaning. By this Yagya should nourish the Devas, meditate does not you, not your charity does good. Okay. In this way, by nourishing each other, you will achieve the highest good. So, परम पद को प्राप्त करने के लिए हमें ब्रह्मा जी ने मनुष्य मात्र को ये आदेश दिया है कि देवता हमारी रक्षा करे और नरिशमेंट, और हम देवताओं की यज्ञ के द्वारा। अब आगे इस देव यज्ञ के बारे में और बातें बताने आ रही है श्रेया शर्मा। My name is Shreya and I'm 8 years old. We can perform Dev Yagya by rituals such as Dham, the fire sacrifice. When we offer ghee, samagri, all kinds of nuts, grains, seeds, and herbs into the fire, it multiplies and spreads in the air. For example, when we put 10 grams of desi cow's ghee into the fire, it produces 1 ton of oxygen. 1 ton of oxygen. It also removes atomic radiations from the atmosphere, which benefits the whole world. So on earth, all the devtas such as the earth, water, fire, and sky and air are being purified and nourished by the heaven. All the offerings in the fire are being accepted by Agni Devta, deity of fire, and distributed to all devtas in the celestial world as well. In these countries, it's maybe not possible to do Dev Havan daily, but we can still do a small fire sacrifice by lighting up a deer every day with a cotton wick and ghee. This will also produce oxygen and remove all kinds of impurities from the atmosphere. We can also nourish the devtas on earth by not spreading pollution and try to prevent global warming and polluting. Thank you. केवल जो हम आहुति देकर हवन में यज्ञ करते हैं, केवल उसके लिए कि आप बोलो कि मैं तो कर ही नहीं सकता, रोज तो मैं ये देव यज्ञ कर ही नहीं सकती या कर नहीं सकता, तो ऐसी बात नहीं है। देव यज्ञ आप मात्र एक दिया जलाने से भी आपका देव यज्ञ संपन्न हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को सिखा कि छोटे छोटे बच्चे भी, अब बच्चों को हम सिखाते हैं कि उनको तो आग से खेलना नहीं है, वो तो हवन नहीं कर सकते, और दिया भी पेरेंट्स की गाइडेंस में सब कुछ। तो हमने बच्चों को और भी देव यज्ञ के फॉर्म्स बताए हैं कि कैसे, जैसे पोल्यूशन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, और आगे और भी स्पिरिचुअल वेज ऑफ डूइंग देव यज्ञ। इसे ये पंच यज्ञ छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, बड़े तक, हर एक के लिए पॉसिबल है। तो किसी के लिए कोई मतलब वो नहीं होगा बहाना कि हम तो कर नहीं सकते, क्योंकि कई प्रकार है। तो और प्रकार के देव यज्ञ किस प्रकार से आप कर सकते हैं, यदि हवन नहीं हो सकता तो आप और भी दूसरे ढंग से कर सकते हो। और इसको सुनाने आ रही है कृपा अरोड़ा। Pranam Devi ji, Namaste everyone. My name is Kripa and I am 9 years old and I am going to be telling you about the spiritual way of Dev Yagya. If you are not able to do the offerings ritually through heaven every day, then you can also do the offerings spiritually through internal sacrifices such as pranayama and meditation. These offerings you make with the prana.
life is energy in the form of our breath. Chanting and praise are also internal sacrifices. Pranayama, meditation, the chanting of all mantras, all purifies our senses, mind, ego, intellect, and nourish all the devas. When the devas get nourished, they become strong and they protect us and they will be able to grant us everything we desire. We can also do Dev Yagya mentally by reciting the mantras in our head and putting the ghee and visualizing that we are putting ghee and samagri in the fire. Thank you. अंतरतम में जाकर आप भगवान को आरती उतार रहे हो और माला चढ़ा रहे हो, ये तो आप मानसिक पूजा में आता है। तो इस रूप से भी आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, मतलब कोई गुंजाइश नहीं है बहाने के लिए। आप किसी भी प्रकार आप कर सकते हो ये देव यज्ञ, जैसे और भी बताया प्राणायाम के द्वारा। अभी आगे और बच्चे और बताएंगे कि हमारे शरीर में कैसे सभी देवता आए हैं और प्राणायाम और ध्यान इत्यादि करने से उनको नरिशमेंट कैसे मिलते हैं। तो इससे पहले परस्मय कंजीवरम आएगा आपको बताने के लिए कि इस देव यज्ञ का सिग्निफिकेंस क्या है। इसने तो अप्लाई भी बहुत कर दिया घर जाकर। Pranam Nidhi ji, namaste everyone. My name is Panch and I'm 11 years old. Today I'll be talking about the significance of Dev Yagya. All the devtas exist in our own bodies. We have 5 cognitive senses, 5 active senses, and 4 inner senses. The 5 cognitive senses are the eyes, ears, nose, tongue, and skin. The 5 active senses are the mouth, arms, legs, genitals, and anus. The 4 inner senses are the mind, ego, intellect, and chitta. All the devtas exist in these senses. When they are strong, they protect us from evil thoughts and desires, but when we do not nourish them, they become weak, and asuras gain control. Then we start to have evil thoughts and misuse our senses. Bhagwanji's body we call the macrocosm, and our own we call the microcosm. Everything that happens in the macrocosm also happens in the microcosm. The battle between devtas and asuras happens at various levels in the macrocosm and microcosm. When we nourish the devtas, they gain control of the battle, and we will, as I said earlier, not misuse our senses and not do evil. But when we do not nourish the devtas, the asuras will gain control, and we will misuse our senses and do evil. All the devtas in our senses emerge from Bhagwanji. For example, Surya Devta emerged from the eyes of Bhagwanji and entered the eyes of the human body. In the same way, all the devtas emerged from the same sense of Bhagwanji and entered the same senses of the human body. That is why in the Vedas they say Sahasra Pratima Purusha, which means that the human is the exact image of Bhagwanji. Thank you. और इसमें हमने इनको वेदों का ज्ञान दिया है, जो हमारे वेदों में बात लिखी गई है कि इन पुरुष सूक्त आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि सभी देवी देवता जो है ये भगवान के अंगों में से निकले हुए हैं, और जिस जिस अंग से निकले हैं भगवान के उसी अंग में मनुष्य के भी चले गए। जैसे सूर्य देव आंखों से निकल के भगवान के मनुष्य के आंखों में सूर्यदेव। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं क्योंकि इनको मैंने सिखाया है कि कौन कौन से अंग में कौन कौन से देवताओं का वास है। तो बहुत अच्छी ये बातें आप जरूर ध्यान में रखिएगा जो अभी इसने आपको सुनाया। इन देवताओं का वास सुनाने आ रहा है। सबसे पहले जो कॉग्निटिव सेंसेस, हमारे ज्ञान इंद्रिया जो है कान, त्वचा, आंखें और जिह्वा और नासिका। So I'm explaining in Hindi because you are getting the explanation in English for those who can't understand. So for the cognitive senses is coming सार्थक। सार्थक देशपांडे आपको बताएगा कि कौन कौन से देवता 5 ज्ञान इंद्रियों में हैं। My name is Sarthak Deshpande. I'm 4 years old and I want to tell about cognitive senses. The devata of the ears is Dik Devata and the mantra of the devata is Om Dik Devata Namaha. The devata of the skin is Vayu Devata and the mantra of the devata is Om Vayu Namaha.
the Devata of the eyes is Surya Devata, and the mantra of the Devata is Om Arkaya Namaha. The Devata of the tongue is Varun Devata, and the mantra of the Devata is Om Varunaya Namaha. And the Devata of the nose is Ashwin Kumar Devata, and the mantra of the Devata is Om Ashwini Kumarabhyam Namaha. Thank you. एक्टिव सेंसेस है, जो कर्म इंद्रियां हैं, मुख हमारे होते हैं, हाथ और हमारे पैर होते हैं, और दो नीचे वाले इंद्रियां जो ये इसके बारे में बताने आ रही है यशी दवे। Pranam Didi ji, Namaste everyone. My name is Yashi and I am 5 years old. Today I will talk about the active senses. Mouth, Agni Devata, Om Agnaya Namaha. Hands, Indra Devata, Om Indraya Namaha. Legs, Vishnu ji, Om Vishnuvaya Namaha. Hands, Yamraj Devata, Om Yamaya Namaha. Genitals, Prajapati Devata, Om Prajapati Namaha. Thank you. 10 इंद्रियां हमारे कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, तो कुछ हमारे अंतःकरण के होते हैं, माइंड, ईगो, हमारे जो मन, बुद्धि और चित्त और अहम है। तो इसके बारे में बोलने आ रहा है परम दवे। My name is Param. I am 6 years old. I want to talk about the Antakaran. Mind. Devata, Om Chandraya Namaha. Ego. Shivji, Om Chandraya Namaha. Intellect. Brahmaji, Om Chaturmukhaya Namaha. Chitta. Narayana, Om Narayana Namaha. Very good. तो अब आपको भी पता चल गया कि हमारे कौन से अंग में कौन बोल गए। कोई बात नहीं, हमारे पास लिस्ट है, आप या आप बच्चों से फिर पूछ लेना, उनको पता है। तो अब ये देव यज्ञ, अब इसके बाद जो ये तो पहला यज्ञ था, अब सेकंड यज्ञ जो है पितृ यज्ञ, इसके बारे में अब आपको बहुत सी बातें बताने आ रहे हैं बच्चे। तो सबसे पहले आलोका शाह बताएगी कि व्हाट इज पितृ यज्ञ। Pranam Didi ji, Namaste everyone. My name is Aloka and I am 8 years old. Pitya Yagya is the type of yagya we should all do. Pitya means deceased ancestors and for both the mother and father. But Pitya also means parents and nearest elders who are still alive. So Pitya Yagya is the sacrifice done for both the deceased ancestors, for parents, grandparents who are alive. Yes, very good. Thank you. So पितृ यज्ञ है जो हम अपने पूर्वजों के लिए करते हैं जो इस दुनिया में अपने हैं, लेकिन अपने माता पिता और अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो भी जिंदा है उनके लिए भी पितृ यज्ञ। अब ये सारी बातें बच्चे कैसे करनी है, क्या क्या होता है, ये आपको सुनाएंगे। सबसे पहले जो हम पेरेंट्स अपने माता पिता और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो पितृ यज्ञ करते हैं वो कैसे करना चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं उसको। आरुषि सावनी।
Pranam Didi ji, Namaste everyone. My name is Arushi Sahani and I'm 11 years old. Today I will be telling you how to do Pitri Yagya for parents and grandparents alike. The Vedas say Mati Devo Bhava, Pitri Devo Bhava, which means that a mother and father are both God to us. Therefore, we should always respect and obey our parents. And therefore, we always need to respect and obey our parents. Since we are born, our parents take very good care of us, fulfilling all our needs. We can never pay back for everything our parents do for us. That is why it is our duty to care for our parents, especially when they grow older. We also need to love and respect our grandparents for everything they do for us. Loving and caring for parents and grandparents, respecting and obeying them, always being ready to help them, are all different ways of Pitri Yagya which we should do daily. To learn how to do Pitri Yagya for the ancestors, we first need to understand what death is and what happens to the person who dies. Thank you very much. Thank you for listening. पितरी यज्ञ अपने माता पिताओं के ये जो आजकल चलता है, माता पिताओं को ओल्ड हाउस में रख देना, ये सब बातें पितरी यज्ञ की डेफिनेटली नहीं है। माता पिताओं के लिए आजीवन सेवा करनी चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन सब कुछ ये बच्चों को सिखाया। और मुझे कुछ है कि बहुत से बच्चे ये पितरी यज्ञ के बारे में सीख के घर में जाकर करने भी लगे। कोई बच्चे जाकर अपनी माँ को हेल्प करने लगे, पूछने लगे कि क्या क्या करना है, कुछ हेल्प करूँ, कुछ ये करूँ। कुछ बच्चे और भी पितरों के मतलब अपने पेरेंट्स के जब आप आज्ञा पालन करोगे, सुनोगे बात, तो कैसे साथ में रहोगे। मतलब बहुत सारे बच्चे अपने का नाम नहीं लूंगी, पेरेंट्स आकर सुनाए कि ये बच्चे अप्लाई करते हैं इसलिए। तो जैसे इसने बताया कि अभी इन बच्चों को थोड़ा सा मृत्यु का कॉन्सेप्ट भी सिखाया है कि मृत्यु हमारे यहाँ मृत्यु क्या है, किसको कहते हैं और मृत्यु के बाद क्या होता है। तो ये मृत्यु का टॉपिक उनको बताना, उनको तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा कि मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद क्या होता है। क्योंकि हमारे पितरों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए जो मृत्यु को प्राप्त है, वो उनके लिए यज्ञ कैसे करना चाहिए, पहले मृत्यु के बारे में समझना है। तो इस टू टेल व्हाट इज डेथ और व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, इसको बताने के लिए आ रही है ईवा पटेल। Pranam Didi ji, Namaste everyone. My name is Eva and I am 10 years old. Today I will be talking about what is death and what happens after. Our real self is Atma, so we are not this body, mind, senses, ego or intellect. These are our bodies. We all have three types of bodies: physical body, astral body and causal body. Atma never dies, which means we never die. So the one who dies at death is the physical body. Atma along with the astral and causal body goes on a journey after death. According to the Vedas, people who die go to the Pitri-lok, the world of the ancestors. They stay there in their astral and causal body until it is time to return back to earth to take rebirth. It takes 1 year for them to reach the Pitri-lok. During this journey and in the Pitri-lok, they do not have any food or water. Hence, they depend on their descendants for sacrificial food and water. If they are not nourished through sacrificial food and water, they will begin to suffer in their astral and causal body. People whose ancestors are suffering usually have problems in life, such as not being able to get married, trouble in married life, not being able to have kids, and obstacles with work. It is very important to do sacrifices to our ancestors for both our happiness and the ancestors as well. Thank you. वेदों का ज्ञान इनको बताए हैं कि आपने एक सुना होगा पितृ दोष। कई बार हमारे जीवन में कई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो पता चलता है कि पितृ दोष लगा है। तो इसलिए होता है कि हम पितृ यज्ञ नहीं करते हैं
और पितृपक्ष हमारे बनाया गया है इसलिए कि हम पितरों के लिए अपना जो देना है या जो यज्ञ है कर सके। तो इसके बारे में भी बच्चे आपको बताएंगे सारा, इनको पितृपक्ष के बारे में भी सिखाया है। तो लेकिन सबसे पहले मृत्यु के बाद हम दफनाते नहीं, आपको पता है हम लोग क्रिमेट करते हैं, ये भी बच्चों को बताया कि किस लिए करते हैं। ये सारे इंटरलिंक्ड है अपने आपस में, तो इसलिए हर एक चीज का उनको लिंक करके बताया है कि कैसे होता है। तो इसके इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिमेशन के बारे में आर्यमन आपको बताएंगे। सामने आर्यमान सामने। प्रणाम दीदी जी, नमस्ते एवरीवन। अभी थोड़ा ऊंचा कर दो, अभी भी लो है। हाँ Pranam Didi, namaste everyone. My name is Arnold Sani and I'm 9 years old and I will be telling you the importance of cremation. When a person dies and casts off the physical body, he is called a Preta, and only after cremation of the physical body, he starts his journey from Prithvi Preta to Jivak. This is why at night time we don't bury the dead bodies, we cremate or burn the dead bodies. Cremation of the physical body is important and highly beneficial for the departed Atma. The greatest attachment of every person is their own body. After death, when the body is not burned, the Atma together with the subtle and causal body is still linked to the earth due to attachment to the physical body. Its journey to the Prithvi milk and celestial worlds is then interrupted. The Atma then hovers in space and is not able to take rebirth. After death, when the body is burnt, the remaining ashes are thrown into a holy river such as the Ganga. The Atma then starts its journey to the Prithvi milk. All mantras, prayers, and offerings bring peace and comfort to the departed Atma. Okay, thank you. थैंक यू। आपको अब पता लग गया कि दाह संस्कार किस लिए करते हैं, ताकि आत्मा इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर आगे अपनी यात्रा में जाकर आगामी लाइफ में जा सके। तो अब नेक्स्ट आ रही है उपासना, जो आपको पितरों के लिए कैसे यज्ञ करना चाहिए। उपासना परीख। Pranam Didi ji, namaste everyone. My name is Upasana and I am 11 years old. Today I'm going to be talking about how to do Pitra Yagya for ancestors. Pitra Yagya we can do through two ceremonies called Sraddha and Tarpana. It helps the departed Atma in its journey after death in its life to Pitralok. Giving donations to a mandir, feeding and giving donations to Brahmins and poor people in right time and place with faith benefits the Pitris, which is called Sraddha. One is offering with water with black sesame seeds to the Pitris. Sraddha and Tarpan help the departed Atma in its journey from its hunger and thirst to Pitralok. Offerings of water. Offerings of water, rice, oblations to the Pitris give them satisfaction, strength, and nourishment. Pitris bless their descendants by giving them
health, wealth, knowledge, and longevity. And performance is to Sra is absolutely necessary. Thank you. Okay, very good. Thank you. तो आपको समझ में आ गई बातें कि पितृयज्ञ कैसे हम कर सकते हैं और पितृयज्ञ कब करना चाहिए ये बताने के लिए सिमरता आ रही है, सिमरता वर्मा। Pranam Didi, Namaste everyone. My name is Sabrina. I'm 11 years old and I'll be talking about when we should do Pitri Yagya for ancestors. There is a special time in the year fixed for doing offerings to the ancestors. It is called Pitri Paksh. Pitri means ancestors, Paksh means 2 weeks of a month. So Pitri Paksh is a 16-day period dedicated to the ancestors. It usually falls on September immediate after the Ganesh festival. So it starts on the full moon day and ends on the new moon day. The last day is also known as Mahala Shraddha. During this period, one should not be doing any suspicious ceremonies like housewarming, weddings, etc. And also not start new activities like opening a business, buying a house or a car. Because this period is only meant to pray for ancestors and to make food and water in their name through Shraddha and Darpana ceremonies. Thank you. थैंक यू। पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए, इन दोनों दिनों में अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए और जितना आप गरीबों में यहाँ वहाँ दान देकर लोगों को खिला सको तो ये अपने पितरों के लिए आपका यज्ञ होगा। अब इस पितृ यज्ञ के बारे में इसका जो लेजेंड है, मतलब हमारे इतिहास में ये परंपरा भी कहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसको किसने किया था, पहले इसको बताने के लिए केशव अरोरा आएगा। Pranam Didi ji, Namaste everyone. My name is Keshav and I am 7 years old. And I am going to be telling you about the legend of Pitru Paksh. Karna the king from Mahabharata, son of Surya Devta and brother of the Pandavas, was a great donor. He took an oath to donate and never say no to anyone. When he died, he went to heaven and he was only served gold and jewels as food. He asked in the day why was he only served gold as food. And the day told him that he only donated gold and gems and never donated food to the poor and for his ancestors. King Karna realized his mistake and wanted to correct it. Then he was permitted to go back to earth for 16 days and perform Shraddha for the poor and for his ancestors. For them, this period is called Pitru Paksh. Okay, very good. कर्म की कथा है महाभारत में, कैसे वो कभी उन्होंने अन्न का दान नहीं किया और पितरों के लिए नहीं किया था श्राद्ध तर्पण, तो इसलिए हेवन में मतलब स्वर्ग में भी उसको सिर्फ सोना चांदी ये सब चीजें ही मिला खाने को, तो मौका मिला उसको वापस आने को और श्राद्ध का ये 15 दिन पितृपक्ष का उसी से हुआ है। और अब नेक्स्ट जो थर्ड यज्ञ है, नुपुर पूछ लूँ, नुपुर बैठी है बोलने को बीच में इसका पूछ लेती हूँ। रेडी? इसने अपना मंत्र सुनाता है, हाथ देखने वाला सवेरे उठेगा।
वही फिर सुना देगी है ये भूत यज्ञ। तो भूत यज्ञ क्या है ये आपको सुनाने आएंगे बच्चे अब। और भूत का मतलब वो भूत नहीं आप समझना, ये हिंदी में हम घोष को बोलते हैं। ये आपको बताएंगे, तनिष्का आपको बताने आए कि भूत यज्ञ क्या होता है। तनिष्का रखो। My name is Kanishka and I'm going to say the meaning of Bhut Yagya. Bhut means all types of creatures such as animals, birds and reptiles. All the domestic animals depend on us fully for food and care, while those which live in the forest need our help and protection to survive. Their dependence is partial because they can survive without our help. However, it is our duty to take care of all animals by protecting them and nourishing them, because we are also dependent upon them for our food and survival. A few examples are the cow, which gives us milk. Birds, bugs, and snails help our crops from being destroyed by insects. Snakes and scorpions make the air breathable for us because they eat all the poison in the air. That is why they are so poisonous. Otherwise, we would not be able to survive breathing the poisonous air. Our scriptures say, Akshivantaha Karnavantaha Mama Sikhaya, which means all those with eyes and ears are our friends. So like friends, we should all take care of each other and help each other. We should also take care of animals and protect the animals. We should never kill or eat animals. The bad karma that arises when we kill animals and the debt we have from using their products and services can only be repaid by the Bhut Yagya. Thank you. Very good, thank you. बहुत सुंदर बात हमारे शास्त्रों की अक्षवंत कर्णवंत मम सखायो कि हम सभी प्राणी मात्र वसुधैव कुटुंबकम है। सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, जितना भी पशु पक्षी जानवर जितना भी है सब हम एक ही परमात्मा के संतान हैं और हमें एक दूसरों की रक्षा करना चाहिए। हर ये जानवर और पशु पक्षी ये लोग नहीं होते तो हम भी नहीं जी पाते इस सृष्टि में, तो इसलिए बहुत जरूरी है इनकी, तो इनका केयर करना भूत यज्ञ है। और इसके बाद मनुष्य यज्ञ जो चौथा यज्ञ है इसके बारे में बताने आ रही है सौम्या शर्मा। Pranam Didi Ji, Namaste everyone. My name is Soumya Sharma and I'm 10 years old. I will be telling you about Manushya Yagya, which means sacrifice to all humans. We owe a lot of debt to all fellow human beings. From the time we're born till our death, our fellow human beings have provided us with all our needs to survive and progress in life. We cannot make our own clothes, grains, vegetables, all stationeries and books for education, and all the other necessities we have in life. These are all made by our fellow human beings. Hence, we owe a lot of debt to them. Many people play an important role in our lives and contribute to our happiness and well-being, such as people who help us in growing up, who educate us, and who help us with our duties. We owe a debt to all those people. Sacrifice to humans also means to offer food to our guests and brahmanas, to feed the poor and hungry ones, and to help all those who seek our help and protection, donating to the needy ones and help them in time of crisis in their lives. Offering food and donations to the swamis and sannyasis because they serve the humankind without receiving any salaries. So, it is the duty of the householders to take care of their needs. We also need to respect the sannyasis and brahmanas for their knowledge and sacrifices. Respecting all human beings, sharing with all, caring and loving with all human beings are all signs of sacrifices to humans. All this is really important for the order and regularity of the world and also for our own salvation. Hence, try to help or serve someone every day. Show respect, love and care to everyone daily. Thank you. Thank you. मनुष्य यज्ञ बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि कैसे परस्परम प्रेम भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे की हरदम सहायता करनी चाहिए। तो ये अब लास्ट यज्ञ जो है ब्रह्म यज्ञ,
पंच यज्ञों में से। इसको ब्रह्म यज्ञ क्या है बताने आ रही है भवानी बलदेव। Pranam PDT, Namaste everyone. My name is Bhavani and I am 6 years old. Brahm is the supreme god Bhagwan who's got Sat, Chit and Anand. Sat means eternal, imperishable, which never changes at any place, time or circumstances. Chit is pure wisdom and Anand means eternal bliss. So in other words, Bhagwan is complete and perfect and doesn't need anything from anyone. He is not dependent on us at all. So Brahma Yagya has to be done entirely for our own self and for the sake of our liberation. Very good. Thank you, very good. तो अभी तक जो 4 यज्ञ थे ये आदान प्रदान के था कि हमें उनकी जरूरत है, मनुष्यों को, पशुओं की, पितरों का, ये और फिर हम उनको देते हैं। लेकिन ब्रह्म यज्ञ जो है ये मोक्ष वाले के है कि अपने मोक्ष के लिए हमें ब्रह्म यज्ञ करना आवश्यक है हमारे उत्थान के लिए। यशी दे Arnav State. Next is Keshav Arora. Next, Maha Yagya. Kripa Arora next. Sorry. Next is Alota. Anishka Kapoor. Samrita Verma. Next. And Upasana Parikh. And Mumu. बाल विहार का ये कार्यक्रम हमारे बच्चों के लिए हर वर्ष इसी तरह होता है। हरिप्रिया कह रही थी कि आई एम प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन एंड आई कैन से आई एम प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन हरिप्रिया एंड करुणा। बहुत मेहनत की है लोगों ने। छोटे बच्चों को सिखाना कितना मुश्किल होता है आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने इनकी बात सुनते हैं बच्चे, इसलिए जल्दी सीख जाते हैं। बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, बहुत सुंदर ढंग से बच्चों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है। पेरेंट्स को ये स्पेशल तालियां होनी चाहिए जो इतनी मेहनत से बच्चों को लेके आते थे। और कई लोग मैं देखती थी जितनी देर बाल विहार चलता वो लोग उतनी देर वहाँ बैठे रहते थे, इंतजार करते थे। इतना समय देना बच्चों के प्रति अपनी सजगता, ये सही में आप लोग सभी आशीर्वाद की बात है। I would like to thank Didi ji, Haripriya ji, Karuna and others for arranging this Bal Vihar course. If we want to retain our culture, then this is the only way to go. Have the Bal Vihar classes, the children will attend it, they learn something and they can retain our culture. I also thank all the children who attended the classes, especially their parents who have taken initiative to enroll them in the classes. Also thank all the volunteers who have dedicated their time for this particular cause. Thank you.